इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान इन डिफरेंट पीरियड्स। पाकिस्तान की इकोनॉमी का सफ़र उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। कभी तेज़ी से तरक्की, कभी सख्त बहरान। पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट मुख्तलिफ पीरियड से गुजरी है और हर पीरियड की अपनी पॉलिसी और मसाइल रहे हैं। शुरू के दौर में यानी कि 1947 से लेकर 1958 में एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर तवज्जो दी गई। अयूब खान के दौर में यानी कि 1958 से लेकर 1969 में इंडस्ट्रियल ग्रोथ तेज़ी से हुई, लेकिन इससे अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क बढ़ गया। भुट्टो के दौर में यानी कि 1971 से लेकर 1977 में नेशनलाइजेशन की गई ताकि इस फ़र्क को कम किया जा सके, मगर इससे इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गई। ज़ियाउल हक़ के दौर में यानी कि 1977 से लेकर 1988 में रेमिटेंसेस और फॉरेन एड से इकोनॉमी को सहारा मिला। 1990s में प्राइवेटाइजेशन और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुआ, जबकि 2000 के बाद मॉडर्नाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि सीपेक और सर्विस सेक्टर पर तवज्जो दी गई। मजमूई तौर पर पाकिस्तान की इकोनॉमी को सियासी अदम इस्तेहकाम यानी कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, कर्ज़ों और महंगाई जैसे मसाइल का सामना रहा है। इस टॉपिक का पहला MCQ जो कि अर्ली ईयर्स यानी कि 1947 से लेकर 1958 तक है। पाकिस्तान फर्स्ट इकोनॉमिक प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, आंसर है बी, 1950। द फर्स्ट 5-year प्लान कवर्ड द ईयर्स, आंसर है सी, 1950 to 55। The main focus of the first 5-year plan was B. Agriculture. The first 5-year plan largely failed due to, answer है A. Political instability. Pakistan's economy in early years depended heavily on, answer है B. Agriculture. Refugee rehabilitation impacted economy by, answer है B. Increasing burden on resources. The role of private sector in early years was, answer है B. Limited. Pakistan inherited how much industrial base from British India? Answer है C. Weak. Currency used immediately after independence was, answer है B. Indian rupee with stamp. State Bank of Pakistan was established in, आंसर है बी, 1948। उसके बाद है अयूब एरा यानी कि 1958 से लेकर 1969 तक। इकोनॉमिक ग्रोथ इन अयूब एरा इज ऑफन कॉल्ड, आंसर है ए, गोल्डन एज। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान स्टार्टेड ड्यूरिंग, आंसर है बी, अयूब एरा। मेजर फीचर ऑफ अयूब्स पॉलिसी वाज, आंसर है सी, इंडस्ट्रियलाइजेशन। Growth rate during Ayub era was approximately, answer है C, 6%. Income inequality increased during Ayub era due to, answer है B, concentration of wealth. Which sector grew rapidly in Ayub era? Answer है B, industry. The 22 families refers to, answer है B, industrial elite. Basic democracies system was introduced by, answer है B, Ayub Khan. Agricultural reforms of Ayub aimed at, answer है B, increasing productivity. Foreign aid during Ayub era mainly came from, answer है C, USA. उसके बाद है भुट्टो एरा यानी कि 1971 से लेकर 1977। Bhutto introduced B. Nationalization. Industries nationalized in 1972 included, answer है B, steel and banking. Main aim of nationalization was, answer है B, reduce inequality.
Land reforms were introduced in? Answer है B 1972. Nationalization negatively affected? Answer है B private investment. Pakistan Steel Mills was established with help from? Answer है C USSR. Economic growth in Bhutto era was? Answer है C low. Labor policies in Bhutto era? Answer है B favored workers. Banking sector was nationalized in? Answer है C 1974. Main criticism of Bhutto's policy? Answer है B inefficiency in public sector. उसके बाद है जिया एरा यानी कि 1977 से लेकर 1988 तक. जिया रिवर्स्ड भुट्टो's पॉलिसी बाय? आंसर है सी प्राइवेटाइजेशन, लेकिन पार्शल था वो. मेजर सोर्स ऑफ इनकम ड्यूरिंग जिया एरा? आंसर है बी रेमिटेंसेस. अफगान वॉर इम्पैक्टेड इकोनॉमी बाय? आंसर है बी इंक्रीजिंग फॉरेन एड. इस्लामाइजेशन पॉलिसीज इंक्लूडेड? आंसर है बी ज़कात एंड उशर. इकोनॉमिक ग्रोथ इन जिया एरा वाज? आंसर है सी हाई. इनफॉर्मल इकोनॉमी एक्सपेंडेड ड्यू टू? आंसर है बी वीक कंट्रोल. एग्रीकल्चर ग्रोथ वाज सपोर्टेड बाय? आंसर है ए सब्सिडीज. फॉरेन एड मेनली केम ड्यू टू? आंसर है बी अफगान वॉर. इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग जिया एरा वाज? आंसर है सी इंक्रीजिंग. क्रिटिसिज्म ऑफ जियाज इकोनॉमी? आंसर है बी डिपेंडेंसी ऑन एड. उसके बाद है 1990s से लेकर मॉडर्न एरा तक. 1990s इकोनॉमिक पॉलिसी फोकस्ड ऑन? आंसर है बी प्राइवेटाइजेशन. स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय? आंसर है बी IMF. प्राइवेटाइजेशन कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन? आंसर है बी 1991. मेजर इशू ऑफ 1990s इकोनॉमी? आंसर है बी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. मुशर्रफ इरा यानी कि 2000 सौ? आंसर है बी इकोनॉमिक ग्रोथ. मेजर रिफॉर्म इन मुशर्रफ इरा? आंसर है बी टैक्स रिफॉर्म्स. CPEC इज रिलेटेड टू? आंसर है बी ट्रेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. CPEC agreement was signed with? आंसर है बी चाइना. पाकिस्तान's current major economic challenge? आंसर है बी इन्फ्लेशन एंड डेट. लास्ट वन है मेन ड्राइवर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी इज? आंसर है सी सर्विसेज सेक्टर.